guys, welcome back to class for planning. You're with Rahul Sharma, your friend, and it's बात चल रही है assignments की solutions one by one. So now it's time to discuss the solution of MEG 1414. So this is really important one. कई सारे स्टूडेंट इनके आंसर्स ढूंढ रहे हो, आंसर्स ही नहीं मिल रहे सर. वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर, द परफेक्ट आंसर दैट वी नीड टू पुट इन द असाइनमेंट. चलो यार, फर्स्ट क्वेश्चन सर स्टोरी लाइन से नहीं है, सीरियसली स्टोरी लाइन से नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द आइडिया ऑफ नेशन? सर आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन. आइडिया ऑफ नेशन इज द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ नेशन. तो इंडिया को 1950 से शुरू करेंगे यार और आज तक ऐड ऑन करेंगे. अलॉन्ग विद आई एम गोइंग टू ऐड द सम, so not just the basic storylines from your text. Look at here, the beginning, that is really important. From the independent 1947, the establishment of India as a secular republic in 1950. 1947, India was being partition हुआ on the basis of Hindu Muslim बेच दिया गया, तो हिंदुस्तान नाम रखा गया, द लैंड ऑफ हिंदूज. अच्छा, इसको लिया गया बट बिगिनिंग में हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना. क्यों? क्योंकि एज अ नेशन के बाद उसने एज अ नेशन को हाईलाइट कर दिया. हेट सेट्स द फर्स्ट लाइन, ध्यान से सुनना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. कहता फ्रॉम द इंडिपेंडेंस 1947 टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ सेक्युलर रिपब्लिक. In 1950, these leaders defined their own idea of India and speed through them in a public consciousness. So who were the leaders? Yes, the leaders. ये जो इंडिया जो बना ना, इनको लीडर्स का कंट्रीब्यूशन कहो तो सीरियसली दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. The idea of their vision come being an inclusive nation, a liberal socialist idea, tired of the common violence and that is recently witnessed in every season of hate. They set pragmatic over the bright future. The story told again by the Nehru, Gandhi and other leaders of Indian National Congress to India and the rest of the world made Indians believe that the fundamental nature of the India was the tolerance and communities. तो इंडिया का जो नेचर है वो टॉलरेंस का हो गया. जैसा इन हिंदू दिखाते हैं वैसे दुनिया मान ले जाती है. सो यू आर पीपल टू टॉलरेट. सीरियसली यू आर बोर्न इंडियन तो आप टॉलरेट करोगे. यू हैव टू टॉलरेट ऑल द नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन हियर देयर. आंसर में ऐड ऑन करनी होगी. The legitimacy of the idea of the tolerant nation had the fact that most Islamic radicals had become busy in running the newly begun story of Pakistan. The Hindu radicals who posed a greater threat to the idea also lost their foothold and the sympathy among the masses of the users when they murdered Gandhi. By the fact the violence against the man who had effected the nation, the like the today's power holder who foolishly enough to contribute the most of Gandhi's idea of the nation, the violence saw in that masses really understand the importance of peace and the Gandhi had preached. अब यहाँ पे गांधी जी का, नेहरू जी का, वो इनके बाद जो लोग इकट्ठे हुए इन्होंने कैसे नेशन को बिल्ड किया, हाउ दे क्रिएट द नेशन, वो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको इन बिटवीन दिस आंसर. तो somehow this is not from your syllabus. बहुत क्लियरली ये सिंपल सा आपको एक रफ आइडिया क्रिएट करके आंसर देना है. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. अकाउंट फॉर द रिच स्कोप ऑफ द कंपैरेटिव स्टडिंग इंडियन लिटरेचर. सो कंपैरेटिव एंड दैट टू स्टडिंग इंडियन लिटरेचर. क्या क्या ऐड ऑन करना और कैसे करेंगे वो सब यहाँ दिया गया है. The comparative has known as the comparative literature is a method of investigating while world literature is a body of valuable literary works. वो लिटरेचर पूरा क्लियर करना पड़ेगा. ये किसने मतलब दास ने बोला था, मैं उसको पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ. Then despite this term the comparative literature means, yes I need to mention comparative literature, the ambiguous to many practitioners, ambiguous चीजों को बताना. Student scholars in India who one would expect are familiar with the debate surrounding and discipline because it addresses the crucial issues of pluralism, the cultural democracy and a subcontinent. The purpose of this seminar is to signify address and space which has existed in disciplinary formation in India since 1956. तो सर इसको पूरा डिटेल में लाना, फिर कंपैरेटिव लिटरेचर को एक्सप्लेन करना, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, किस किस का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, सब कॉन्टेंट लिटरेचर में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल है, वी गाइस नीड टू डिफाइन इट. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑनेस्टली कहीं भी आपके कोर्स से नहीं थे. नेक्स्ट वन, व्हाट आर थीमेटिक प्री ऑक्यूपेशन द राइटर समस्कारा. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर कोर्स. तो समझकार जो राइटर है उसने क्या क्या हाईलाइट किया. तो व्हाट आर थीमेटिक प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द राइटर इन समझकारा. जो राइटर के थे वो हमें एक्सप्लेन करने.
तो यार पहले मैं क्या करूं, मैं राइटर के बारे में बताऊं या मैं समझकार के बेसिक प्लॉट को लेके आऊं, और आई शुड गो इन डिटेल द क्रस्ट इन द बिगिनिंग. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. The various dogmas are associated with also being narrated. In order to do various theories of domination and hegemony, they are also taken into account. The politics of Agara has been taken account. Explanation in the doing the nature and artificially of both and men women have been dealt with. So the first paragraph begins here. The nature symbols has always been debated. It has been argued relentlessly whether they are signified or signifier, or both. However, this paper is not actually concerned with the nature but also concerned will move in parallel explaining that the symbol further symbolize the way it was being written. तो सर यहाँ आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन आफ्टर दीज टू पैराग्राफ्स ऑफ द प्ले. जिस स्टोरी लाइन की हम बात करें, समस्कारा की बात करें, समस्कारा by U.R. Anant Murthy, translated into English from the Kannada by A.K. Ramanujam, is a novel about the people in Agara, mainly the Brahmin caste. Yes, this is all about the Brahmin caste. Target भी किया गया उसे. Contemplating about the last rites of the dead man of Brahmin caste, but who breaches the caste limit during his lifetime. This is also the subtitle of the novel, Right for the Dead Man. The contribution tough of the whole novel that brings many symbols of the caste system and caste system दोनों को highlight करता है. These symbols are the mainly live in nature consisting of men and women. The paper will focus on the woman as a symbol of the various shades and complexions. The women in the novel have been satisfied finally by the author who display his potential in exploring the nature of the caste and the class system define the identity and a multifold pressure on them. Identity and multifold pressure कितना है उसको highlight करना है. Of course, there is a limit of the words both systematically and semantically. And due to consigns that been taken in novel, this precisely why every woman character is symbol, but only the past and present, not in future. उसको explain करना है, and then you guys need to tell the story of Chandri, the main protagonist. Yes, we need to mention about the priest. अच्छा पुत्ता को भी mention करना, वो एक बहुत major play है जहाँ पे आप चीज़ों को explain करते हो. And the final sum up, yes, final sum up that rules out as conclusion, जिसको आपको add on करना ही करना है अपने आंसर में. This is the key. Jump up to next question. Question number 4. Discuss the theme of communism in treatment of the novel Tamas. The most important novel in this particular paper. Tamas. इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होगा. आई रियली वॉन्ट कि अगर आप अगर इस पेपर को लिया हो और उसका असाइनमेंट तैयार कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली क्लियर करना. ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है. कहता है डिस्कस द थीम ऑफ कम्युनिज्म एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द नॉवल तमस. First two paragraphs are the key. I'll be very slow in pitch. I want you to be very tentative. हो सके तो लिख लेना यार. Tamas written by renewed Hindi author Bhishma Sahani. Yes, I repeat, Bhishma Sahani. Is the story of the lives of the common people caught in conflict of identities. The conflict of identities. Tamas explores how, in a backdrop of 1947, India-Pakistan partition and its consequences, ordinary peace-loving villagers get tangled in a dirty affairs of politics. जो मरे थे, जो मरते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, और वो शिकार होते हैं पॉलिटिक्स का. हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा. Are the brainwashed by communal fantasies into pursuing narrow-minded interests aligned and distinct to the society on the basis of religion. Yes, on the basis of religion. Written in 1974, Tamas has a great critical acclaim and also won the prestigious Sahitya Academic Award in the following year, 1975. It is believed that the most of events that conspire the book are partially inspired from the real-life author. Sahani had been a first-hand witness in Rawalpindi in 1947 communal rights and that ravaged the country. Tamas represents the darkest phase of Indian history. Darkest phase. So darkest phase होता ना उसको define करता है Tamas. जो next paragraph है इसको please copy paste करके अपने आंसर में add करना अगर हो सके तो. The description of the life of the book is ambiguous and one way in everyday life. Further, Tamas can be read as explained or analyzed of the complex human nature, where Sahani has explained how fragile the human mind becomes in certain situations.
It is impossible for the reasonable and prudent man to imagine a religious identity can become a cause for larger scale massacre of the people by both sides. However, the impossible transformation into a stark reality when the human mind is possessed by phantasm rather than the reason. Yes, the human mind failed to discuss the basic point. You guys need to go in points. First, the Indian society, then what happened at that moment, the case of identity, and then please do come up with a certain conclusion of this particular answer because it rule out the certain facts and don't forget to add the certain quotations. वो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को क्लियर करने में. Now come up to the last question of this assignment. Write a critical note on Dalit literature. Dalit literature. When somebody do talk about Dalit literature, I do have something come in my mind that only a Dalit can write Dalit literature. द स्टेटमेंट फुल है. अच्छा, यहाँ पे उसको पूरा क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को बताना है. एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, तो ये चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज द की ऑफ दिस आंसर. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन दलित लिटरेचर. दलित लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ दलित्स रिटन बाय दलित. Repeating the line, please guys listen carefully. Dalit literature, literature for the Dalit written by Dalits, is the literature to combat high artistic towards the Dalit. The atrocity against the lowest stratum reached the maximum limit during the 18th century. A never-ending fire who constantly flaming the hearts of downtrodden. The attitude of the rebellion emerged developed among Dalits who were oppressed and suppressed by the centuries in traditional social pattern. Dalit literature has provided a new voice and identity to the communities that have experienced discrimination, exploration, and marginalization due to hierarchical caste system. Dalit literature established itself as a separate category written in many of the Indian languages. Several writings under this category have emerged as a strong voice of Dalit communities in different literature over the last 5 decades. The impact of Dalit writer and the writing has also compelled the Literary Association and academies to recognize as a separate category of the literature and reward it through several means. रिवॉर्ड भी करता है विद अ डिफरेंट मीन्स. तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए. आप पूरा पूरा बताओगे दलित लिटरेचर. यू नीड टू गिव एग्जाम्पल हाउ द नोन दलित राइटर डू प्रेजेंट दलित्स. वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बिगिनिंग से लास्ट तक आपको मेंशन करनी है. ये सारे के सारे पॉइंट्स मस्ट बी ऑन योर टिप्स वाइल राइटिंग दिस आंसर, क्योंकि ये आपके लिए काम करेगा. सो आई होप यहाँ पे आपको हेल्प मिली होगी कि इस आंसर को कैसे लिखना है और ये आंसर जो है असाइनमेंट्स के कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे. कैच यू वेरी सून विद द न्यू वीडियो. बाय गाइस.